So hello everyone and welcome to Career Launcher. We all are aware that every day at 8 p.m. we are running a weekly current affairs. So let's begin with today's class. This is the fourth week of current affairs that we are going to discuss it in today's class. So am I audible, visible? Current affairs that we are going to discuss it in today's class. I think I'm audible, visible, everything is fine. Yes. So let us begin. Yes, good afternoon. Harsh, Krishi, Sachdeva, good afternoon. I think my voice is clear. मेरी आवाज clear है? Visible है सब कुछ? Yes, fine. So this is the fourth week of current affairs revision we are going to do. और if you are interested in watching the previous classes, जैसे होता है सर हमको पुराना वाला देखा हो कहाँ से मैं देख सकता हूँ तो first of all please subscribe to the channel, go to the playlist पे जाना, नीचे मूव करना, यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें व्यू पर प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस सीरीज, ठीक है, वेयर जनवरी पार्ट 1 से जनवरी वीक 1 से वीक 1 2 3 4 हमने करा है, फिर फरवरी मार्च अप्रैल, लाइक दैट वी हैव डन. So this is the fourth week that I am going to discuss in today's class. Okay, so let us begin with the first question. Which are the following countries set to inaugurate world's highest bridge? Please tell me. बताओ. What is the right answer? Yes, Krishi says, Deva, you are right. The right answer is option D. China is the right answer to this question. Okay, China to inaugurate world's highest bridge. It will cut time from 1 hour to 1 minute. So that is what you should know. है ना? And कौन से river पर है? This is Huajiang Canyon Bridge. ये bridge का नाम है. It is on the river Bipan River, and it will be world's highest bridge with 625 meter. अच्छा, इंडिया का highest bridge कहाँ बन रहा है? India's highest bridge, and that is almost on which river? What is that? Anyone? आपने सुना है चेनाब रिवर पर? ये this one, Chenab Bridge. This will connect Jammu with Srinagar railway route. I hope you are aware there is a railway route that is being developed connecting Jammu with Srinagar. Okay, और इसकी height अगर आप देखोगे, this height is more than Eiffel Tower. This is 359 meter. ठीक है, Eiffel Tower से भी ऊंचा है. But if you see it carefully, जो Hujiang वाला है और ज्यादा है, 625 meter. That is why world's highest bridge इसको कहा जा रहा है. Okay, that is what you should know. So this is on Chenab River, which is actually having highest bridge in India. ठीक है, ये पता होना चाहिए. It is in Riyasi district of Jammu and Kashmir. ठीक है, हाँ हाईएस्ट सिंगल रेलवे ब्रिज अगर कहो तो ये वाला है, बट ओवरऑल अगर हाईएस्ट ब्रिज कहो तो दिस वन इज देयर. Okay, the next is India and Dash are likely to ink a deal with 26 Rafale marine aircraft. Rafale M jets उसको कहा जा रहा है marine. It will be used by Indian Navy, है ना? So we are buying from which country? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, and I'm expecting everyone to answer. Yes, option B, France. France की कंपनी है Dassault Aviation, which manufactures this. So B is the right answer to this question. Yes, Harsh Sharma and Krishi Sachdeva, you both are right. So actually we have built our own indigenous aircraft carrier. What is its name? क्या नाम है? INS Vikrant. And this INS Vikrant will be using those 26 Rafale jets. है ना? INS Vikrant, and there is one more which is we have bought from Russia, INS Vikramaditya. Okay, that is what you should be knowing about. Yes, Krishi says Deva, Harsh Sharma, you are right now. Very good. AC1 indigenous aircraft carrier one. Good. Okay. And it has been built by which company? INS Vikrant किसने बनाया? Which company has made this? Cochin Shipyard Limited, है ना?
Cochin Shipyard Limited has made this. ठीक है, पता होना चाहिए ये सब न्यूज में. The next is recently UNESCO added dash new sites in global geoparks across 11 countries. कितने नए ग्लोबल जियोपार्क्स ऐड किए गए? हाँ, कोचिन शिपयार्ड, राइट. हाँ, बताओ, how many global geoparks were added? And please tell me, do we have any global geoparks in India also? UNESCO's global geopark. So the answer is 16. The right answer is C. Yes, Harsh Sharma, you are right. So 16 new global geoparks were added. Okay. And even North Korea and Saudi Arabia also have witnessed global geoparks being added. But India does not have any site featured in the UNESCO Global Geopark list till now. That is what we should be knowing about. Nishit Sethi, that will come on Tuesday and Wednesday 3 p.m. Okay, January or February ka revision we have done. Complete revision of March and complete revision of April will be doing on Tuesday 3 p.m. March ka, or Wednesday 3 p.m. for April. Okay. Geoparks होता है ना, जैसे like UNESCO World Heritage Site ancient historical significance का होता है. Geoparks है geographical significance के लिए जो होता है. That's called as global geopark. That's समझ लो short. Okay. The next one is in a groundbreaking conservation milestone. Dash has become the first country to successfully breed artificial breeding के जरिए through critically endangered great Indian bustard. ये है great Indian bustard, मैंने फोटो भी लगा दिया. So artificial insemination means you can say fertilization of eggs, male and female gamete done in lab. That is called as breeding. या जो भी कहला उसको है ना, artificial insemination, breeding, ये सब टर्म लिखते हैं, है ना. So which country has become the first to do it? ये जो बर्ड इसको कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. अरे भाई नाम में लिखा हुआ है. It is found in India. इस रीजन, वेस्ट रीजन में, राजस्थान और इस रीजन में मोस्टली होता है. मोस्टली इन राजस्थान रीजन. ठीक है, that is what you should be knowing. Great Indian bustard. ठीक है, GIB through artificial insemination. Okay. The next one is India's first prototype fast breeder reactor. We are having reactors, जो already existing reactors है. Pressurized heavy water reactor generally we have, but this is fast breeder reactor, nuclear reactor that is going to be commissioned next year. Where? कहाँ? ये fast breeder reactor है. This is a second stage. देखो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम होता है. ठीक है, होता है, डिटेल नहीं जाना, जस्ट रिमेंबर इट. प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर फर्स्ट स्टेज का होता है. फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज फ्रॉम सेकंड स्टेज. वी आर कमिंग अप विद इन तमिलनाडु's Kalpakkam with the help of Russia. B is the right answer. ठीक है, India's first prototype fast breeder reactor. This is a nuclear reactor which will generate nuclear energy. This is for nuclear energy generate करने के लिए, है ना. हाँ, it is a dual use technology, right? But we are using it for peaceful purpose, for making energy, nuclear energy, and not for nuclear bomb. ठीक है, so this you should be knowing. ठीक है, Tamil Nadu's Kalpakkam. Okay, the next one is recently Dash, the first Latin American leader of Roman Catholic Church died. Leader of Roman Catholic, it means we are talking about Pope, and he was the first Pope from Latin American region. तो किनकी डेथ हुई बताओ, ये तो पता होगा, ये तो काफी ज्यादा न्यूज में था. That is what you should know. Yes, Pope Francis, he was very much in the news. He was ailing for the many months. Yes, he is the right answer. Yes, Krishi Sachdeva, Hari, you both right. He is the right answer. And he died on 21st April 2025. And now we are having, and he was actually from Argentina, right? First from South America. Now we are having a new Pope. He has taken the name as Pope Leo XIV. Originally, his name is Robert Francis Prevost.
and he is actually from America, Chicago से नए वाले, new one. So these are the things you should be knowing about. Okay, yes, very good. Let's move on further. According to RBI circular, minors may be allowed to open and operate savings term deposit account independently once they reach 8 year, 10 year, 12 year, 16 year. इन्हें आप ओपनली अकाउंट खोल सकते हो बिना पेरेंट्स की परमिशन के, एक तरह से इंडिपेंडेंटली विदाउट पेरेंट्स सिग्नेचर और अप्रूवल. कौन सी उम्र में आप खोल सकते हो? व्हाट इज द आंसर? People are saying D. See, you'll be surprised. It is 10 years. B is the right answer. ठीक है? ठीक है? The minimum age for independent operations 10 years. So आप independently operate करके account खोल सकते हो if you are 10 years of age. So B is the right answer. ठीक है? Let's move on to the next one. Who has won Laureus World Sportsman of the Year Award 2025? बताओ. Yes, Krishi Saldeva, you're right. Mondo Duplantis. 2 people have got. Anna Duplantis. One is Duplantis in pole vaulting, another is Simona Biles in gymnast. So the right answer is C. Yes, Hari Satviki Goswami, you are right. C is the right answer. Okay, the next one is which of the following has been designated as UNESCO World Book Capital? Very, very, very important of 2025. UNESCO World Book Capital. Very, very, very important. ये पक्का किसी एग्जाम में आ जाएगा, देखना. आई एम श्योर कोई भी क्लैट एलेट एमएस सेट जो भी जितने भी एग्जाम होते हैं किसी एक में आ जाएगा ये, श्योर. द राइट आंसर इज सी, रियो डी जेनेरो, ब्राजील. सी इज द राइट आंसर. ठीक है. फर्स्ट टाइम a Portuguese speaking city has been selected. So here is India. This is Brazil. यहाँ पर रियो डी जेनेरो है, शॉर्ट में रियो लिखते हैं. And this year we'll be having one summit also here. यहाँ एक summit भी होने जा रहा है इस साल. Go and find out what is that. ठीक है, it is very, very important. UNESCO World Book Capital बहुत important है, याद रख लेना. C is the right answer. The next one is the first country to use AI to write laws. The first country to use AI to write laws is so United Arab Emirates will be using it. So A is the right answer. Okay. So here is India. This is UAE. The capital of UAE is Abu Dhabi. Okay, that's what you should know. The next one is the world's leading male cricketer in the latest edition of Wisden Cricketers Almanac. Wisden actually UK based magazine वगैरह लोग ranking निकालते हैं cricketers की. फर्स्ट मेल क्रिकेटर में किसका नाम है और फीमेल ही बता दो. आई विल बी वेरी हैप्पी. ये 4 ऑप्शन मेल के लिए, बट इफ यू टेल मी फीमेल में भी तो आई विल नो दैट यस यू हैव स्टडीड प्रॉपर्ली. बताओ. हाँ यार, द राइट आंसर इज जसप्रीत बुमराह. बी इज द राइट आंसर. वेरी गुड हर्ष, सत्विकी, यू बोथ आर राइट. एंड फीमेल में स्मृति मंदना हैज गॉट दिस. ठीक है. Yes, Krishi Sachdeva, you're right. Okay, B is the right answer, right? The next one is who has recently created world's first AI generated feature film? पूरा AI से ही बना दिया, मतलब आदमी की जरूरत ही नहीं, अब एक्टर एक्ट्रेस सब AI बना देगा. The right answer is option B, है ना, नरसिम्हा मूर्ति. And the name of the film is Love You. This is the name of the film, and this is actually the filmmaker Narasimha Murthy. Okay, so just remember it. And he is actually in Kannada film industry. It means he is associated with the state of Karnataka. Okay. Okay. Let's move on to the next one. What is the theme of Earth Day for this year? पता है CUT में क्वेश्चन आया था, Earth Day कब मनाया जाता है? So when do we have Earth Day? सर आप भी तो नहीं, आप भी तो AI तो नहीं हो. No, I am a human being.
That is why I am able to understand when you are writing in Hindi also and English also. ठीक है, तो मैं इंसान हूँ भाई. What is the theme of Earth Day? So the Earth Day is on 22nd April, है ना? And the theme is option C. Our planet, our power, our planet. C is the right answer. ठीक है, 22 April, right? हाँ. The next one is according to IMF World Economic Outlook report. What is the GDP growth estimation in India? देखो, estimation ये number नहीं पूछेंगे. Both less likely they'll be asking. वो पूछेंगे क्या World Economic Outlook is report is released by which organization? So the answer is IMF. ये याद होना चाहिए, ठीक है? परसेंटेज वगैरह तो प्रेडिक्शन है, हर साल अलग अलग होता है. ये थोड़ी पूछेंगे कि इस साल कितना प्रेडिक्शन होगा. These are generally not asked. What is asked is World Economic Outlook report is released by which organization? So they'll give 4 options: World Economic Forum, IMF, World Bank. उसमें फिर आप कंफ्यूज करोगे कौन सा होता है. So the answer is IMF. That is what you should know. ठीक है? The center has reappointed Dash as the deputy governor of RBI. I have told you RBI has 1 governor and 4 deputy governors. One of them has been recently reappointed. The right answer is option D. T. Ravi Shankar. D is the right answer to this question. Okay. For a period of 1 year again. So D is the right answer. Okay. The next one is, what is the primary purpose of Kongjam Day festival in Manipur? Manipur has been recently in the news in the last 2 years. Primary purpose of observing Kongjam Day in Manipur. The right answer is to honor the heroes who died in Anglo-Manipur War of 1891. This is the right answer. Anglo मतलब तो British. British versus Manipuri. The war might have happened in 1891. ठीक है? तो उनकी याद में मनाते हैं जो लोग जो हीरोज थे जिन्होंने अपनी जान दी. So B is the right answer. That is what you should know. Okay? Yes, Satvik Goswami, you're right. Let's move on to the next one. Who among the following became India's first amputee? Amputee मतलब होता है जिसका, let's say, one who is do not have a hand or a leg. Amputee swimmer to conquer the Park Strait. Park Strait कहाँ पर है? कौन से water body में? कौन से 2 वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है? Yes, इंडिया और श्रीलंका के बीच में. हाँ, राइट. सो द राइट आंसर हियर इज ऑप्शन बी. ठीक है, शास्त्रुति विनायक नकाडे, है ना? तो इंडिया या श्रीलंका के बीच में जो है इसको पाक स्ट्रेट कहते हैं. तो अगर 2 वाटर बॉडी का जो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अरेबियन सी है, इस दोनों को कनेक्ट करता है ना. इंडियन ओशन तो थोड़ा नीचे हो गया, दैट इज इंडियन ओशन. सो बेसिकली इट कनेक्ट्स इंडियन ओशन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, राइट? हाँ. एंड लैंड में कहा जाए तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट. So 35 किलोमीटर की जर्नी उन्होंने कवर किया. एंड शी इज एम्प्यूटी. उनका आई थिंक 1 लेग इज नॉट देयर, द आर्टिफिशियल लेग इज देयर. हाँ, श्रीलंका से मूव किए और तमिलनाडु के धनुषकोडी में रीच कर गए. द नेक्स्ट इज, who is the subject? The question of what's important. Who is the subject of the photograph that won World Press Photo Award 2025? हाँ, वहीं पे गल्फ ऑफ मन्नार भी है, राइट? Who is the subject of the photograph who has won World Press Photo of the Year 2025? जिसकी फोटो है उसका नाम पूछा जा रहा है, जिसने फोटो लिया वो नहीं पूछा जा रहा है. ठीक है? सब्जेक्ट ऑफ फोटोस ऑप्शन बी महमूद अजौर. जिसने जो विनर है, अवार्ड लेने वाले, वो समर अबू यूलुफ. ही इज द वन हु हैज टेकन द, ही इज द फोटोग्राफर. ठीक है? और इनकी फोटो ली गई, सब्जेक्ट. ठीक है? आई होप यू ऑल आर अवेयर. पैलेस्टाइन फोटोग्राफर समर अबू यूलुफ wins World's Top Photo Prize. The next is, first airport in the country to have multimodal connectivity upon completion is. मल्टीमोडल मतलब ये होता है एक जगह को सब कुछ मिलेगा, ट्रेन, बस, कार, एरोप्लेन, एवरीथिंग एट वन प्लेस. मल्टी मोड, है ना? द राइट आंसर इज नावी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुला है ना.
सी इज द राइट आंसर। इन पानवेल, पानवेल वही मुंबई भी जगह है, मुंबई के पास, फर्स्ट एयरपोर्ट टू हैव मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी अपॉन कंप्लीशन। ठीक है, हालांकि बहुत वेग टाइप का क्वेश्चन था। हाँ यस, जेवार भी कह सकते हो, बट अभी जेवार भी कंप्लीट नहीं हुआ है टेक्निकली। ठीक है, सो हियर सी इज द राइट आंसर। The next is who has declared the winner of presidential election in Gabon with 90% of the vote. So 2023 में इन्होंने military coup करवाया. He is the army officer who did military coup, and now he conducted election and he got all the votes, 90% of the votes. तो आप समझ रहे हो कैसा इलेक्शन हुआ होगा। जल्दी बोलो, सुबह पनवेल निकल आई है, सो वहीं से डायलॉग आया। ये जो पनवेल है ना, दिस इज एक्चुअली अ प्लेस इन मुंबई में ही कहीं पे जगह है, आई थिंक नॉर्थ मुंबई समवेयर। ठीक है, तो वो वाला जो डायलॉग है ना, जल्दी बोलो सुबह पनवेल निकल आओ, यहीं से। यस, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्राइस ओलिवियो नेगोमा इज द राइट आंसर। यस, ठीक है, सो हियर इज इंडिया, दिस इज अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे गैबॉन मिलेगा। ठीक है, सो इन्होंने मिलिट्री को किया, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, 90% वोट जीत लिया। So that is what you should know. The next is India announced the suspension of dash water. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। This is very easy question. So I'm expecting everyone to answer. इतना बार बताया गया, इतना बार डिस्कस किया गया. We have taken separate classes for that. Yes, Indus Water Treaty, है ना, is the right answer. Yes, Harsh Sharma, Krishi Sachdeva, Saptaviki Goswami, you are right. कब हुआ था? Which year? Who are the two leaders? इस पता होना चाहिए आपको, एकदम अब टेप पर होना चाहिए, पूछा जाए फटाफट आंसर आ जाते हैं यार। ये वाला इंडस रिवर है, फिर झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, फिर सब जाके धरातल मिलती है, लाइक दिस। हाँ, तो 1960 में हुआ था बिटवीन जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान। ठीक है, यस सत्विकी, हर्ष शर्मा, यू आर राइट। The next is New China's name that aims to lay the groundwork for the construction of a permanent manned lunar base. नहीं, इंदिरा गांधी नहीं थी उस टाइम पर, इंदिरा गांधी वाज देयर ड्यूरिंग शिमला एग्रीमेंट। ये 1960 का है, जवाहरलाल नेहरू वाज देयर। चाइना का कौन सा मिशन जिसमें वो लोग परमानेंट मैन्ड लूनर बेस बना रहे, अभी ह्यूमंस जाके रहेंगे। लूनर मतलब जहां पे लूनर आ गया, क्या मतलब हुआ? लूनर मींस मून। सो आंसर इज चांगेज 8, दैट इज व्हाट दे आर प्लानिंग। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ग्लोबल टाइम्स इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट होती है, यूएस चाइना गवर्नमेंट की, मतलब स्टेट मीडिया एक तरह से उनकी। यस सत्विकी, यू आर राइट, बी इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2025? ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में मनाते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक। अच्छा, इम्यूनाइजेशन से क्या, वैक्सीनेशन, राइट? सो फर्स्ट वैक्सीन या फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसको कहते हैं? सुना सकते हो? एडवर्ड जेनर का नाम सुना है? एडवर्ड जेनर, इन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी स्मॉल पॉक्स के लिए। नाउ स्मॉल पॉक्स हैज बीन कंप्लीटली एलिमिनेटेड, पूरी तरह एलिमिनेट, इरेडिकेट हो गया है, अब नहीं, नोवेयर यू विल फाइंड। चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया है। ठीक है, चिकन पॉक्स आई थिंक इज इवन टुडे आल्सो देयर, स्मॉल पॉक्स वाज एलिमिनेटेड। ठीक है, तो इन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी, फादर ऑफ वैक्सीनेशन या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी कहते हैं। यस, सो हियर द आंसर इज बी, इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल। ठीक है, बी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल मनाते हैं ना, आप देख सकते हो, इम्यूनाइजेशन ऑफ ऑल इज ह्यूमनली पॉसिबल, मतलब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है कि इंसान सबको वैक्सीन लगा दे, ये कहने का मतलब। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिलीज्ड बाय टाटा ट्रस्ट, है ना। व्हिच स्टेट इज एट द टॉप? बताओ। राइट आंसर इज कर्नाटका, डी इज द राइट आंसर। ये सब इंपॉर्टेंट होता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। ठीक है, ओके, इनकी रैंकिंग देते हैं कि कौन सा टॉप स्टेट है ना, परफॉर्मेंस में। The next is recently PM Modi inaugurated LPG bottling plant at Dash in Bihar. वैशाली, सिवान, गोपालगंज, कटिहार, मतलब एलपीजी का बॉटल वगैरह बनेगा, है ना, उस टाइप का चीज होगा कुछ।
राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गोपालगंज। ठीक है, एलपीजी प्लांट एटसेट्रा, बस जस्ट हैव एन आइडिया। Yes, C is the right answer. Yes, Harsh Sharma, right now. The next is Dr. K. Kasturi Ranjan. Very, 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 very important. He recently died. He was what? He was a farmer. ऑप्शन ए इसरो चेयरमैन। ठीक है, और नीति आयोग के मेंबर रह चुके थे। ठीक है, ए इज द राइट आंसर हियर, है ना। यस, कृषि सचदेवा, हर्ष, यू आर राइट। ठीक है, अगर आप देखोगे फॉर्मर नीति फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड प्लानिंग कमीशन के मेंबर रह चुके थे। ठीक है ना, ये बताओ चाहिए। और पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिल चुका, ऑल द थ्री पद्म अवार्ड्स। ठीक है, दैट्स व्हाट यू शुड नो, कल ही क्लास में बताए थे। हाँ, यस। द नेक्स्ट वन इज पाकिस्तान अनाउंस टू पॉज शिमला एग्रीमेंट। कब हुआ था ये शिमला एग्रीमेंट? इससे मैंने पूरा क्लास ले चुका हूँ, उसको जाके सर्च करना है, वॉच इट। तो वो कहा था नकल के लिए अकल चाहिए। The answer is option C. It is written in front of you. C is the right answer. ठीक है, शिमला एग्रीमेंट अगर आपने नहीं देखा है, प्लीज गो एंड वॉच इट, बिकॉज शिमला एग्रीमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ईयर, specifically after Operation Sindoor. It was very much in the news, है ना। The terrorist attack happened. After that, Indus Water Treaty was in the news. Shimla Agreement was in the news. ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। Okay, the next one is Indian government decided to build first indigenous AI foundation model, जिसको large language model कहते हैं, LLM, large language model. Like we have ChatGPT, built by OpenAI, which is an American company. Similarly, DeepSeek has been made by China. तो हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं, we are also trying. Which company is trying? और the government has approved, actually government ने सब किया कि आप बनाइए। नाम में ही बहुत कुछ लिखा है, सर्वम एआई इज द राइट आंसर। यस रणवीर, यू आर राइट। और वही नहीं, और भी दो तीन कंपनी, सर्वम एआई के अलावा सॉकेट एआई, GNANI.ai और GAN.ai, इन लोगों को ही मिला है, तीन और कंपनी को, है ना। 3 मोर कंपनी लिखा ना, सर्वम के अलावा 1, 2 और 3, देयर आर 3 मोर कंपनीज। राइट आंसर इज बी, फर्स्ट इंडिजिनस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है। The next is how many people did India left out of extreme poverty between 2000? Actually ऐसा है 2011-12 से 22-23 ऐसे करके। How many people according to World Bank कितने लोग extreme poverty से बाहर आ गए इंडिया में during this period? Extreme poverty से they have defined in their own way extreme poverty. Option B, 131 million. Yes, सत्यकी गोस्वामी एंड हारी यो बोथ राइट, है ना। 2011-12 से 22-23 के बीच। ठीक है। The next is why did Pakistan halt Cholistan Canal project recently? हाँ, because of course option C, this was in the news, तो आप कॉमन सेंस ही बताओ, ये आंसर होगा। ठीक है, they are making it on Indus River, तो of course पानी का प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या बनाएंगे। So that is what you should know. C is the right answer. Yes, Ranveer Krishi Sachdeva, you are right. The next is which of the following Indian firm recently crossed 10 lakh crore market valuation? Net worth मतलब वही market valuation, market capitalization की valuation. Largest company as far as market capitalization is concerned in India. Of course, Reliance Industry, D is the right answer. Yes, Harsh, Krishi Sachdeva, you are right. Yes, Satviki. The next one is NESAR satellite is a joint project between which two space agency?
Yes, Hari Harshama, you are right. C is the right answer. Yes, Satvik Goswami, C is the right answer. Yes, Krishi Sachdeva, Ranveer Harshama, you are right. C is the right answer. The next one is Simlipal. Odisha Simlipal has been declared as national park. How many national parks are there in India now? 107. C is the right answer to this question. Okay. And national parks are declared under Wildlife Protection Act 1972. ये वाला सैटेलाइट क्या चीज से रिलेटेड है? रडार इमेजिंग करेंगे, रिमोट सेंसिंग करेंगे, दूर से रिसर्च कर रहा था लैंड वगैरह पर कि लैंड कैसा है, टेरेन है, एग्रीकल्चर कैसा है, दिस आर कॉल्ड एज रिमोट सेंसिंग. नेचुरल प्रोसेस वगैरह को. अंटार्कटिक क्रायोस्फीयर, जो क्रायोस्फीयर मतलब होता है लेयर ऑफ आइस शीट ऑन द अंटार्कटिका, उस पर रिसर्च करेंगे. दैट इज व्हाट द आइडिया इज. NASAR will be world's most expensive earth imaging satellite. ठीक है, अर्थ की पूरी इमेजरी बनाते हैं इसे. The next is which of the following country is world's first operational solar railway project in 2025? World's first operational solar railway project. The right answer is option C, Switzerland. Yes. The next one, मतलब इसमें क्या है, देखो पटरी पर ना सोलर पैनल बिछा हुआ है. Are you seeing it between the gaps of the two tracks? There is solar panel. ठीक है, to actually get the energy from solar panel. The next is who has been appointed as the first ever vice president of PLO, Palestinian Liberation Organization. PLO is actually the one who is controlling the West Bank region of Palestine. So the right answer is Hussein al-Sheikh. The right answer is option C. President is Mahmoud Abbas, and he has appointed Hussein al-Sheikh as the vice president of PLO. So C is the right answer. Yes, Sharma, you are right. C is the right answer to this question. Okay, ये वाला हिस्सा जो है, this is actually West Bank region. And this one is actually Gaza. And West Bank and Gaza together is called as Palestine. Yes, C is the right answer. Yes, Satvik and Sharma, you both are right. The next one is who among the following has become the first Indian to import a Tesla Cybertruck? ये Tesla Cybertruck, अब इसको ट्रक कहो, कार कहो, क्या पता नहीं क्या कहना चाहिए, because it's like a car but इतना बड़ा चौड़ा सा है कि इसको ट्रक भी कहते हैं. Tesla is a company made which is actually Elon Musk owned company. ठीक है, and he has made this car or truck, जो भी कह लो, Cybertruck कहते हैं. And this is prominent in America, but now an Indian has also डब्बा लग रहा है. Yes. पता नहीं कैसे लोगों को ये पसंद आती, but that is their choice. The right answer is there's an Indian businessman, Mr. Lavji Dalia. Yes, B is the right answer. And he is actually, he has imported this Cybertruck first in India. अपने अपने शौक होती पसंद होता है ना. That is what you should be knowing about. Is a Surat based and a Gujarat based businessman. ठीक है? That is what you should know. So B is the right answer to this question. So this is all about today's class. Today I'll be meeting you at 8 p.m. also. We'll be having a static revision, static GK का revision कराऊंगा. But do join me at 8 p.m. ठीक है? Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.